जर्नी पे मैं जानना चाह रहा हूँ विंगिट से डिपिट. It has been around more than 5 years, I guess. Almost 5 years now. अब जर्नी आपकी Wingit अभी हमने close down किया हुआ है because we are again revamping it. अच्छा. Now I want to do it in a different model altogether. You would be seeing Wingit back again, I think from December, January. Alright. But we are doing it in a very different model, and we are doing it in Pakistan and few other markets altogether. So हम उसका क्या ये जहाँ जहाँ हमारे distributors हैं डिपिट के, they will have Wingit with them. Okay. So it will grow with Dipit along. अब तो डिपिट में खैर पाकिस्तान से बाहर भी जा रहा है. So how it all started? पाकिस्तान से बाहर कैसे अपॉर्चुनिटी मिली आपको? पाकिस्तान से बाहर ऐसा अपॉर्चुनिटी मिली. That's again a very. You were lucky. I was very lucky again on that. I remember I went to a food exhibition called Food Africa. It happened in Cairo. और मैं उस food exhibition में I basically went to explore Cairo because of the pyramids and because of Egypt and all of that. So I went predominantly because of that. At that point of time, when I was at a stall, और मेरे पास again पैसे तो नहीं थे, तो मैं अकेला ही जाया करता था ऑफिस से. So मैं stall अपना लगा रहा था. I remember सुबह का वक्त था, तो a very old gentleman came, a Japanese gentleman, and he said, "What are you selling?" So I said, "I'm selling sauces." And I think he was tired because he was having a round of the exhibition, so he was tired. So he sat down and I gave him water. And he said, "Show me." So I made him try. In my enthusiasm, I made him try. I completely forgot that he's Japanese. तो मैंने उन्हें habanero सबसे पहले try किया. और उन्हें बड़ी spicy लगी. उन्होंने बोला, "You are selling this?" मैं, "Yes, I'm selling this." मैं बोला, "But I'm selling a lot of other sauces also." मैंने जैपनीज़ को अपना सोया सॉस ट्राई कराया. अच्छा. So वो मुझे बोला, ये इसको हटा दे, बाकी इस पर बात कर. सोया सॉस रहने दे. सोया सॉस रहने दे. तो मैं उनसे बात करने गया, उनसे मेरी दोस्ती हो गई. और मुझे नहीं पता वो कौन है क्या है, बस मेरी दोस्ती हो गई. मैं उनसे ऐसी मशवरा करने लग गया कि बताएं मुझे कि किस तरह है जैपनीज़ मार्केट क्या है, whatever. I never knew that he is one of the biggest distributor and retail chain person of Japan. Oh wow. I never knew that. And he said, "Son, I will help you." And then he gave me his card, which was in Japanese. I couldn't read it. And I kept it in my diary, and he left. And then I got a call from a little while later from Japan. कि जी, we have a Zoom call. Please come on Zoom. Blah blah is the link and the details. And so when I went on Zoom call, there was 9 people sitting in front of me, and the chairman sitting, which was him, and the other director, finance director, फलाना ये वो फलाना sitting. And I was like, यार ये तो बड़ा आदमी लग रहा है मुझे, इतनी सारी फौज बैठी है इसके साथ, और मैं अकेला बैठा हुआ उससे. So he said कि भाई, we will get this from you. You will ensure, Zishan, that the quality of the habanero sauce that you showed me there will stay the same. So our first order is one full container of habanero sauce. Oh wow. Oh, and I was like, I was looking at to him, and he said, "Don't worry, he'll give you a lot more." So from there it started off, and then the second incident happened that I was sitting in I was in a Gulf food, and after that I was going for my umrah. And I went to Saudi Arabia, I did my umrah, and I was coming back. Or in a flight, I was sitting right next to a Pakistani. और ऐसी गपशप लगने लग गई, और मैं अपनी बातें करने लग गया, वो अपनी बातें लग गए. तो मैं बोला, मैं सॉसेस वॉसेस बेचता हूँ. उसने बोला, अच्छा मैं काम वाम करता हूँ रिटेल स्टोर में. ना मैंने उससे पूछा कि तुम कौन से रिटेल स्टोर में करते हो, ना उसने मुझसे पूछा कि तुम कौन सॉसेस बेचते हो. और हम दोनों जो है इसी तरह दुबई से वहाँ पहुँच गए, जद्दा पहुँचे. उम्रे के लिए मैं जा रहा था, और वो गल्फ फूड से वापस जा रहा था, मैं भी गल्फ फूड से वापस जा रहा था. सो उसने बोला, अच्छा ये लो मेरा कार्ड, और मैंने उससे बोला ये लो मेरा कार्ड, एंड वी एंडेड अप. एंड देन ओवर देयर आई डिड माई उम्रा, एंड आई वाज लाइक, यू नो, जब वापस हो रहा था तो उम्रा करके वही जद्दा से आई हैड अ फ्लाइट बैक होम. सो आई सेड, ये इसका कार्ड भी जद्दा का, इसके पास चले ही जाता हूँ, हेलो ही कर लेता हूँ. सो मैं गया तो वो पैंडा कंपनी थी. मुझे कुछ नहीं पता कि पैंडा सऊदी का सबसे बड़ा रिटेलर है, और वो उसका कैटेगरी हेड है ग्रोसरी सेक्शन का. तो जब मैं गया, उसने मुझे बोला, यार ये वो, मैं भैया मैं तुम्हारी गिफ्ट लाया हूँ. उसने बोला, क्या लाया? मैं यार ये मेरे पास सॉसेज थी, गल्फू पर बच गई थी,
मैं पाकिस्तान जाऊँगा उधर मेरे पास बहुत हैं, इधर तुम रख लो। ही वॉज अ पाकिस्तानी, मैंने चिली गार्लिक तुम्हारे घर वर में इस्तेमाल होती है कि तुम रख लो। उसने मुझे बोला अच्छा सर देखो आप, तो उसने चिली गार्लिक ऐसी खोल कर ट्राई करी। आई टुक अबाउट 12 बॉटल्स। अच्छा मैं उसने मुझे ट्राई की, तुम बोला अच्छा सब को बैठो, तो मैं बैठ गया उसके पास। मैं बोला मुझे कॉफ़ी पिला दो, उसने मुझे कॉफ़ी पिला दी। तो उसने मुझे बोला तो मेरे पास इसलिए तो नहीं आया कि मैं पैंडा पर काम करता। मैं नहीं यार, आई सीरियसली आई डिडंट न्यू दैट यू वर्क हियर एंड दिस इज़ द चेन। मैंने तो अभी आते हुए गूगल किया था तो मुझे ये पता चला। उसने मुझे बोला अच्छा ठीक है बैठ जाओ। ही वेंट इनसाइड, ही गॉट अबाउट 4-5 पीपल। वन ऑफ देम वाज इजिप्शियन, जो कि उनका कैटेगरी डायरेक्टर था ग्रोसरी का। एंड ही केम एंड ही सेड समथिंग इन अरबिक टू देम कि ये सॉसेस ट्राई करो। सो उन्होंने दे ऑर्डर्ड सम फूड फ्रॉम द कैंटीन एंड दे गॉट द फूड एंड दे स्टार्टेड ट्राइंग इट। ओपन बॉटल, हमारा अच्छा सा रैपर उन्होंने उतारा, बोतल को देखा, उन्होंने ट्राई की। उन्होंने उसको पूछा कि इससे पूछो कि ये बनाता किधर है। तो उसने मुझसे बगैर पूरे जवाब दे दिया पाकिस्तान में, क्योंकि वो पाकिस्तान जानता था पाकिस्तान में बनाता है। तो उसने बोला नो दिस कैन नॉट बी मेड, दिस क्वालिटी कैन नॉट बी मेड इन पाकिस्तान। और वो इजिप्शियन मेरे पास आके खड़ा हो गया और उसने मुझे अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में बोला डू यू रियली मेक इट इन पाकिस्तान? आई सेड यस आई रियली मेक इट इन पाकिस्तान। और डू यू पैक इट इन पाकिस्तान? उस वक्त बेसमेंट में ही बन रही थी। उस वक्त नहीं बेसमेंट में नहीं बन रही थी, हम एक फैक्ट्री में आ चुके थे। तो उससे मैंने बोला येस वी मेक इट इन पाकिस्तान। सो वो उधर से उसने हमें पसंद की, उन्होंने मुझे कॉन्ट्रैक्ट भेजा। उन्होंने बोला आप हमारे से एक्सक्लूसिव करेंगे 3 साल, आप किसी को भी नहीं देंगे सऊदी अरब। तो मैंने यार लोगों से मशवरा किया, सबने बोला भाई लोग ना इधर 6-6 साल खड़े रहते हैं, ये नहीं रखते, अगर ये तुझे जो भी दे रहे हैं ना साइन कर दे। फिर किसी ने मुझे बोला भाई ये बहुत सारे पैसे लेते हैं, तो मैंने उनको ईमेल पर जवाब दिया, मैंने आई हैव नो मनी, मैंने यही लिखा है आई हैव नो मनी। तो उसका एक्सक्लेमेशन स्माइली आया, वी डोंट वांट योर मनी, वी वांट एक्सक्लूसिविटी फॉर 3 years. So I said okay fine, and they sent me a contract. Then right after that the COVID came in. So at that point of time our relationship with all of these people became very stronger, because Europe से जो वो sauces लेते थे they started not coming there because Europe factories were down, supply chain was in a mess, logistics was in a mess. So everything was working in your favor. Yes. So when they asked me for help, send 2 containers in or 5 containers in 1 week time. I ran the factory 24/7. I was sleeping there, waking up there, everything there, and we started giving it at the timeline that they wanted. So the relationship, the bond became very strong, and they respected that yeah, he listens to us, he responds in a positive way. I used to never say no to them. One was that it was business, but other I thought that अगर वो मुसीबत में अगर मैंने आज हेल्प नहीं की उसकी, तो उन्होंने मेरी इतनी हेल्प की है तो मैं कैसे उन्हें मना कर सकता हूँ. So I used to always tell them, don't worry, you have given it, it would be done. And we make it happen, we ran, so that's where the और अब relationship कितने was. मुल्कों में आपकी We presence है are Dipit now की? in 22 countries around. Wow. Yes. And with how many variants of sauces? There's 61. 61 SKUs in more than 20 वो countries. SKUs flavor 61 है, SKUs Oh. ज़्यादा. Here it's a Cinderella story of the real world. I can tell you. Wow. Very अच्छा nice. एक बात दिशान में जहन में आ रही है, सिंस यू हैड नो फूड एजुकेशन और एक्सपीरियंस, तो फिर दरअसल के लिए तो फिर कुछ ना कुछ टेक्निकल My wife had a lot of food experience, not in terms of क्योंकि education. प्रिजर्वेटिव्स भी यूज हो रहे हैं अब तो, इट्स नाउ ऑन द इंडस्ट्रियल Yes, स्केल. we got some You people. hired people? Yes, we hired people for that also. Also, my wife had a lot of experience because her father had a food kind of an industry. So she had a lot of experience of food from there coming in. Then, right, the food का experience तो नहीं था, but मैंने cigarettes बहुत सारे बनाए थे. मैंने Marlboro Black Menthol बहुत बनाया था. मैंने Marlboro Ice Blast बहुत बनाया था. So we used to deal with tobacco, which was leaf. So I had done, in that 6-7 years of my life, just dealing with leaf and all of these preservatives and all of these things, You steaming. had the So idea, I had yeah. it. And then I remember in 2014, Philip Morris sent me on a training of cooking tobacco, because at that time we were working at this different cigarette which is now called जो इलेक्ट्रॉनिक cigarettes जो आ गए, जो हो गए. So हम उस ज़माने में उस पर काम जब कर रहे थे, तो उसके बहुत सारे एक पूरी R&D पर they sent me to Lausanne for training and all of that. So I was
kind of a trained for a different product, but through the food science, through a different lens. जो मेरे साथ हो रहा है ना, Yes, it is going yes, to lead me they somewhere, हाँ. were preparing me for DIPIT. Yeah. So it's rather their investment in me which helped me across this. So yes, so वो experience बहुत काम आया. But you are right, and एक चीज़ जो आपने मुझसे पूछी थी, lot of time networking का एक और चीज़ which is another perspective is that if you work in a very win-win kind of a situation with other person, I think you create solutions. True. ठीक है? It a lot of time helps. The problem starts when you create a win-lose relationship, and that's where the relationship doesn't work out. That is true.